reasons, but right now, excitement is of the show and experts and my co-anchor, my friend with me. So, Amit, what a match it was. एब्सोल्युटली अ थ्रिलर ऑफ अ मैच और श्रीलंका यहाँ पर 4 विकेटों से विजयी रहा है। एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले में उसने अफगानिस्तान को हरा दिया है। तो वाकई ही चर्चा तो बनती है और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जय शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। स्वागत है आपका। Thank you. और साथ ही वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कनन। Namaskar, good evening. नमस्कार जया, व्हाट अ मैच। Exactly. I mean, this was a stunner. I mean, and it has to be because it's a Super Four, and every team, every point counts. And the way Sri Lanka has pulled off this match is, I think, incredible. And I think it was a good decision for them to chase in this match because they knew that the momentum is with them. So, Kanan, initially you were telling me कि आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको कह रही थी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारी इस मुस्कुराहट का राज हम शेयर करेंगे। पहले कॉलर्स भी इनवाइट कर ले 23421084 23421085। और अगर आप मोबाइल से कॉल करते हैं, रूल सिंपल है 011, एंड इफ यू आर कॉलिंग इन आउटसाइड दिल्ली देन टू इट्स 011 बाय डिफॉल्ट। सो हम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं कनन? Super 4, 4 विकेट से जीत, 4-4-4. So I'm also smiling because it's been like 4 of us. और मैं यहाँ पे that ज़रूर 4 is कहना so चाहती हूँ special. कि एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स फॉर अ रीजन. Yes, for a reason and for a reason. Yeah, for a reason. But yes, I was initially thinking that, maybe bowling would be a wrong decision and you were for that. But yeah, I think you proved it right once agaagain. No, I didn't prove made it right. all I think the sense. Sri Lankan cricketers proved it right. They showed that there is nothing like experience. और जो जीत बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने दर्ज किया, उसके बाद से मोमेंटम चेंज हुआ है। आज भी ऐसे लग रहा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सर फट रहा है, बट यही होता है T20 का रोमांच। एंड जो इनएक्सपीरियंस फैक्टर है वो मैटर कर गया आज। एंड अफगानिस्तान लॉस अ प्लॉट एंड वी इवन सॉ राशिद खान एट वन स्टेज, मतलब गुस्से में है। और श्रीलंका ने दिखाया कि देयर वाज नो 80 टाइप्स बट एटलीस्ट 3 people scoring in the 30s. And of course Vanindu showed, he's a class all-rounder. And I had mentioned about him. Yes, you you have did. these bits and pieces cricketer, if they pull it off, and to win the first match, and as Jaya said, a point counts. You've got to play 3 points in the Super Four. So it's a super performance. जी, तो given the fact that it's been a super performance, let's also discuss who could well be the hero of 2020. क्योंकि पथुम निसांका जो कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उन्होंने 35 रन का योगदान दिया। कुसाल मेंडिस, उन्होंने 19 गेंदों पर 36 रन बनाए, लगभग 190 का स्ट्राइक रेट। और तनुष्का गुरतिलका ने 33 रन। तो डिफिकल्ट चॉइस होगा कि आज हीरो ऑफ 2020 कौन होगा जया? आई थिंक अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आई मीन 3-4 बैट्समैन हैं जो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। एंड आई थिंक आई एम इम्प्रेस्ड विद भानु का राजपक्षा। Okay. आई मीन ही प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 221 एंड ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसा स्कोर नहीं था कि जो बहुत कम में चेज हो जाता, बट नीचे जाके राजपक्षा ने जो बैटिंग करी है, आई थिंक इट टर्न द टेबल अराउंड। जी, 14 गेंदों में 31 रन, जिसमें कि 4 चौके 1 छक्का शामिल था। गीतांजलि, हाँ, मैं जय को राज ये का पक्ष था ये, मतलब this was राज का पक्ष, he really showed it. He took very few balls and that was the stage, wickets had been lost in quick intervals. Yeah. And he turned it around very beautifully. And of course, towards the close, you look like, why didn't they do it in the 19th over? But it's okay. You have 20 overs to go and achieve it, they did it. और मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई हमारे जो पक्ष हैं वो शायद इतने क्लियर ना हो, हमारे कॉलर्स के पक्ष हमेशा क्लियर होते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा हीरो ऑफ द 2020 कौन है। तो देखते हैं पहला जो गेस वर्क है वो कौन करने वाला है। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू सिंह उर्फ रमेश सिंह, तहसील तुलई, गांव का नाम पूरे सुपरस्टार सिंह का पुरवा। और आप लोगों को टीम जिस तरह से हमारे लोगों की मदद कर रही FM रेनबो पर, तो खैर पाकिस्तान का कल आएगा वो तो सब सुनेंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सा कम लोग सुन पा रहे हैं। और लेकिन हम रेडियो का भी आ सकते। लेकिन एक बात हम ये कहें, जो सुशील जोशी ने आज कमेंट्री सुनाई बेहतरीन रही, लाजवाब रही। वो यही कहते हैं पकड़ो मैच जीतो मैच, लेकिन वहां से टर्निंग पॉइंट कब हुआ जब उनका कैच छोड़ दिया गया है, वही सब पासा पलट चुका है मैम। बाकी तो हमें सब कुछ सही लगा, इसी वजह से श्रीलंका जीत। अगर वही 50 विकेट जल्दी गिर जाता तो शायद आज अफगानिस्तान को मैं देख पाता। पिंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। जी
जी मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, अफजाल है नाम मेरा। जी, क्या करते हैं आप? जी सर, काम कपड़े का है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो आज के मैच में श्रीलंका 4 विकेट से विजयी रहा। जी विजेता रहा जी। कमी बॉलरों की रही और 2 कैच ड्रॉप हुए, इनकी कमी रही, वरना श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ता जी सर। जी, पर अंततः जी तो चलो श्रीलंका जीती। जी 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 जीत गए, अच्छी बात है। चलो देखो, जिस मैच में मजा आता है वो जो टीम अच्छी खेलती है वो जीतनी चाहिए। और नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है उनका, प्लस 0.59। तो ना केवल 2 अंक उन्होंने लिए हैं, रन रेट भी अच्छा है उनका। जी जी सर, जैसे कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, हाँ जी। जी मेरे सवाल ये है कि आवेश खान की जगह सिराज अहमद को नहीं लिया जा सकता? जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। जया, आवेश की जगह बनती है अंतिम 11 में जो प्रदर्शन रहा है अब तक? आई थिंक देखिए, ये एक फैन का एक पक्ष अलग हो सकता है, थिंक टैंक का पक्ष अलग हो सकता है। तो आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन, थिंक टैंक हमेशा उस चीज़ पे जाता है जो कि आज के मैच को नहीं देख रहा, कि वो ये देख रहा है कि पिछले मैचेस कैसे रहे, किसको सिलेक्ट किया गया और कौन आगे जाएगा। तो आई थिंक वी हैव अ बिल्डअप टुवर्ड्स द T20 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक थिंक टैंक इज द बेस्ट चूजर कि वो किसको लाइनअप में चाहते हैं और किसको देखना चाहते I think Avesh Khan, what I read just now is that Avesh Khan has got fever. Rahul Dravid has ruled him out. So one bad news is of Avesh Khan. Second bad news is Jadeja is going to go under the knife for the knee surgery. So things are not looking good. But India versus Pakistan, we've got enough players, to play all these tournaments. And So Jadeja not only misses out rest of the Asia Cup matches, we are saying he could possibly miss out on the World Cup as well? yes, it's very unlikely, once you undergo the knife, arthroscopy also, because the first 2-3 weeks you don't move at all. And then when you work on your fitness again, you do strength training, you do rehab, and to get match fitness is very different from just, it's not like a normal man having an ACL tear or something. When you undergo a surgery to get match fitness, you will be assessed. You'll go to, the academy in Bangalore. It's not so easy. So you're not going to risk him. You're not going to risk his knee. I personally feel he's delayed his surgery. He should have gone through the surgery maybe 6 months ago so that he'd have been fighting fit, super fit. He's a valuable player. And India will definitely miss him in Australia because he's a guy, he can hit the deck, he bowls flat through the air, he scores valuable runs, he's a good fielder. But, if Akshar Patel is making his chances, also shows that we've got variety. Someone may want one Chahal, someone may want Kuldeep Yadav, but that shows how much of variety and variations we have. Yeah, we do one have thing one thing I जी, would जी. like to add is after the injury is the whole parameters of the fitness becomes very crucial, and that's how the decision will be based for Jadeja. और मुझे कहीं ये भी लगता है जया, बिकॉज ये T20 है और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो ये मान के चलते हैं कि अभी जो टीम खेल रही है वो प्रीटी मच सेट टीम खेल रही है और इसमें कुछ शायद बदलाव नहीं आना चाहिए, बिकॉज हिट एंड ट्रायल जितना होगा उतनी एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है। तो ये भी थोड़ी सी क्लैरिटी आई थिंक आप दें हमारे श्रोताओं को कि अभी तो टीम बिल्डिंग स्टेजेस में है। I think thanks to IPL that we have so much of talent around that we can give chance to anyone who is performing well, Right. and they are match ready. because ईशान किशन भी जब आए थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वनडे में वो आए हैं तो वो कैसा करेंगे, बट द नॉक ही प्लेड वाज एस्टाउंडिंग. तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द वी हैव अ ग्रेट टैलेंट पूल, and I think India will have good talent pool and look at before the World Cup. जी, कुछ और श्रोता हैं अपने प्रश्न के साथ। हेलो आ गया हूँ वेंकट रेड्डी जी। लखवरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से। गुड इवनिंग वेंकट। गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, शुक्रिया। श्रीलंका की टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक और विकेट्स गिर रहे थे लेकिन रन रेट को गिरने नहीं दिया, इसीलिए श्रीलंका वो मैच जीत गए। हर बैट्समैन रन स्कोर किया, ये तो बहुत अच्छा लगा जी। आप हीरो ऑफ 2020 किसको देंगे वेंकट? धनु का राजबक्श को देंगे। बिल्कुल सही, 14 गेंदों में 31 रन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अब देखते हैं कि दूसरा गेस्ट वर्क हमारे कॉलर क्या करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? गोमाराम बात कर रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से। हाँ जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, आज जिस तरह अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था, बहुत ही रोमांचक मैच था। जिस तरह से श्रीलंका ने आज बल्लेबाजी की, उसे यार 7 नंबर थे उसके बाद, इतने अच्छे बल्लेबाजी। ऐसी अगर बल्लेबाजी हो तो यार श्रीलंका और भारत मेरे ख्याल से इस साल फाइनल में हो गई। हालांकि वो मैच भारत जरूर जीतेगा। सवाल मेरा ये है मैम, जी, आवेश खान की जगह दीपक चार को क्यों नहीं खेला जा रहा और समीर सैमसन को टीम में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? अच्छा जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया, आप हमसे जुड़े रहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं अमरनाथ साहब बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं अमरनाथ जी? जी सर, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज श्रीलंका विजयी रहा 4 विकेटों से। सर, श्रीलंका विजयी रहा, बहुत खुशी है। और मुझे आकाशवाणी से के लिए एक शिकायत है सर। जी बताइए। जी सर, भारत का कोई भी मैच होता है, या महिला हो या पुरुष हो, रेडियो पर नहीं कमेंट्री होता है सर, बहुत मन में दुख होता है। जी, कल भारत का पाकिस्तान के साथ है, उसकी कमेंट्री होगी जी। एफएम रेनबो नेटवर्क और प्राइमरी चैनल्स पर। जरूर आनंद दीजिएगा। जी जी जी, आनंद लेते हैं। शुक्रिया। और जो हमारे कॉलर्स लगातार आनंद ले रहे हैं, उनमें एक और भी है हमारे साथ। हेलो, हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? जी, मैं नजमुल हक बात करता हूँ, आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट से। जी नजबुल जी, कहिए क्या कहेंगे आज के खेल के बारे में? जी, पहले आप सबका हमारी तरफ से मुबारकबाद और धन्यवाद। आप सबको भी। जी, बहुत अच्छे तरीके से हम तक ट्रांसफर करते हैं क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री। शुक्रिया हम टीवी शुक्रिया। छोड़ के भी सुनते हैं। आज मैं राजपक्षी जी को ये आज के श्रेय देना चाहूंगा कि जिस तरीके से रन बनाए उन्होंने। हम्म, और श्रीलंका का जैसे आर्थिक व्यवस्था खराब है, वैसे जीतना भी उनके लिए खूब जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो हीरो ऑफ 2020 है वो राजपक्षा को मिलना चाहिए? हाँ जी, राजपक्षा को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कनन, राइटली सो, यू नो, श्रीलंकन्स थिंग्स हैव नॉट बीन ईजी फॉर देम, वेदर यू टॉक अबाउट इकोनॉमी और यू टॉक अबाउट देयर financial problems, cricketing problems. But still, I think today the way their team has played, each and every player has chipped in. I mean, you see everybody has scored to their level today. So it shows they were pretty confident. This is what T20 is. It's not about one player. Yeah. You had Afghanistan, one player scoring 80 odd runs, but T20 is about contribution, and that's why we were discussing before the toss the role of all rounders. We saw that Sri Lanka's got better all rounders. Back to your question about economic situation, the political situation, wins like these, they lift the morale, they lift the mood. जो दुख है उधर श्रीलंका में सब कुछ मिट जाता है एक रात में. Right. Well, let's go to Sharjah where we can now listen into the captain of Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, it's at about 20-25 runs short at the end, and also we didn't field really well the standard we have, and also we didn't bowl in the right areas. That's why we lose the game here. Do you think this pitch, you've played here before, is much better as far as batting is concerned from the ones before? Yeah, when we play last game against Bangladesh, it's a better pitcher today. That's why we shot 20-25 runs at the end. The way Gurbaz start and Zazai Ibrahim, that partnership give us to achieve a big total. But at the end, we missed that. Right, as far as bowling is concerned as well, obviously it's been the strength as far as Afghanistan is concerned. And a little disappointed with the bowlers. Obviously, even someone like Rashid and yourself were so consistent and went for a few. No, we bowl not that much brilliantly, but we bowled really well. But again, we didn't feel really well. Yeah. We dropped some catches. If that catch we taken, that situation will be different here. Well, commiserations again, but you still got a lot of games left in this tournament, so all the very best for the future. Yeah, thank you. Thank you. Afghanistan captain, Mohammad Nabi. Well, I'm going to now invite Mr. Shivanshu Pandey to present the best catch of the match winner, and that is Nazibullah Zadran. A check of USD 1,000 is what he's going to get. That was a phenomenal catch.
The presence of mind that he showed there, the boundary. It was an important wicket as well. That was Dasun Shanaka. Awareness, presence of mind, it had everything. And magnificently taken by Najibullah Zadran. Well, I'm going to request Dasun Shanaka, the Sri Lankan captain, to sign the match ball from Mr. Mohammad Saqib Mirza, area sales manager, Middle East, Hetik. And then if he can walk up here. Dasun. Congratulations. And you're making a habit of these really close run chases, isn't it? Yeah, absolutely. You know, it's the belief of the dressing room. So as a team, we believe that we can chase anything in these kind of wickets. Last few wins that you have, it's all come chasing. Is that what you want to do? Yeah, obviously, you know, definitely we can have a look when we're chasing down, because we can have a clear idea about how the wicket behaves. So it was the plan actually today as well. How good were the bowlers in the last 5 overs? They gave absolutely nothing, to be honest. Yeah, there was a plan coming to this game, and we know that they got a very good batsman with a lot of experience. But see, the plan, the boys executed really well, especially Dilchan Madhusankar, Asita Fernando, and Mahesh Tikshana, and not to forget Vanid Vasaranga today. So he came up with some brilliant stuff as well. So you must be really pleased looking at least the batting lineup. Everyone contributed. There weren't like big runs, but 30, 35 impactful runs. How pleased are you with that? And is that the way forward? As I mentioned in the toss, partnerships is the key to win a game. So there was lack of partnerships in the opening stance. So we had talk about that, went on. So now we know the exact way to approach the game. So I think that's the key to win matches. So it was very pleased to see how Mendes and Pathum got started, and then Gunatilaka, Rajapaksa, and each and everyone contributed through. And congratulations and all the very best, Dasun. Thank you. The Sri Lankan captain, Dasun Shanaka. It was a very good win, that one. But now I would like to invite Mr. Ibrahim Al-Najjar to present the player of the match with a check of USD 5,000 and a trophy. And it is Ramanullah Gurbaz. What a knock that was. Unfortunately, ended up losing side. A phenomenal knock. 84 of just 45 deliveries with 4 fours and 6 sixes. Gurbaz, obviously you would be disappointed, but it seemed like you were batting on a different pitch. I mean, it was a totally different knock. I mean, talk us through that knock. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, of course, disappointed with the result, but it's cricket happen. I think we were short 25 runs. Wicket was not that much difficult. I was just trying to do my natural game and be positive. Yeah, there was a good plan for me, for my team. But that way that we want to finish the last 2 overs, I think that was a little bit not in our favor. Inshallah, we'll try our best to be better than this. Gurbaz, you've been playing a lot of T20 tournaments, domestic tournaments. How much has that helped in your development as a batter? Yeah, of course, we have domestic cricket, everything like, you know, leagues cricket and Afghanistan international crickets. Like busy schedules, just try to be on our process and just keep our hard work. Like, you know, we work so hard for that kind of big competition. So yeah, it's helped a lot with me. Yeah. Jonathan Trott, as your coach, obviously, I mean, that must have also helped, and his contributions to how well you all are batting now. Yeah, of course. He works so hard with us, with all the players, practice session, very good plan. We are so happy from him, and inshallah, we will take that plan from here still to the World Cup as well. And inshallah, that will be helpful with us. Again, obviously, commiserations on the loss, but brilliant innings. Thanks for all the entertainment. Well played. Thank you so much. Thank you. Thank you, Gurbaz.
Ramanullah Gurbaz, the player of the match. Well, that ends the presentation ceremony. Big win for Sri Lanka. Surely, big win for Sri Lanka, but Rahmanullah Gurbaz has been player of the match for his 84-run contribution. So, we were expecting this. Nah, it's surprising. Man of the match from the losing side. I mean, I'm short of words. Yeah. What to say? I mean, that inning from Gurbaz came when they were setting the total. But from Rajapaksa, they have clinched the match from Afghans' hands, and I think that was more crucial, and that's a very surprise decision. It is. Surprised, Karan? I'm not surprised. I'm shocked. You know, this is a team sport. This is not about one individual. Yeah. यहाँ पे एक टीम जीत रहा है, सुपर 4 है. So I would imagine that you weigh the performance not on a statistical note, Right. but on a holistic note. That has not happened. But well, I think Sri Lanka will celebrate winning the match. Losing $3,000 or $5,000 is no big deal. Yeah. They'll make much more money. Do you think this is kind of a, constellation prize which you give to kids that, okay, fine, you have been doing well, so just be happy? I think this is like, giving the grades, when you give a report card in school, you have failed, but then they'll give you in conduct. Very good, can do better, it's like that. So you don't need this prize money, I think you can't make a mockery of this man of the match, If you do it as it regards the best catch, Right. there's no doubt about it. It was acrobatic, it looked like a gymnast, just off the wall. But a winning team normally gets it. And as it is, cricket, T20, ODIs, white ball cricket is loaded in favor of the batsman. And it's not about the 80-odd runs, it's about the guy who made the contribution for the win, for the nation, which has not been counted. जी, लेकिन अब सबकी जो निगाहें हैं वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबले पे होंगी क्योंकि सुपर 4 का अगला मुकाबला कल यानी सुपर संडे को होगा भारत बनाम पाकिस्तान. जया, एक्साइटमेंट? हाँ, definitely. और ये तो पूछना ही मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि आपको क्या लगता है कल के खेल में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रिकेट लवर्स हैं तो हम तो इंडिया के साथ हैं ही, लेकिन इंडिया का जो मोमेंटम है अभी पॉजिटिव ही लग रहा है ना करण? Everything is positive, but I want to go back to one question. Yeah. I didn't get my chance. Sorry, I'm interrupting. But the thing is, you were talking about selection for the World T20. I think this is not the complete picture. You got more variety. Conditions in Australia are going to be very different. India versus Pakistan, obviously, you've got billions cheering in India. And if you look at the population in UAE, far any number of, lakhs of Indians there. So good luck to India. जी बिल्कुल, हम अपने विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020 के साथ कल संडे को बिल्कुल रेडी होंगे शाम 7 बजे और उसके बाद आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी पर सुन सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांटे की टक्कर होगी एशिया कप 2022 में भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबला. लेकिन आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए एस करण आपका, जय शर्मा आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू very much. Thank you and enjoy yourself tomorrow and always happy cricketing. गुड नाइट, शुभ रात्रि. Good night. Hero of the 2020. इस कार्यक्रम